Namaskar दोस्तों. As we have got many queries regarding the form filling, so we have selected some major queries that are faced by many applicants. In this video we will try to resolve them. तो सबसे पहले जो query है वो है date of birth की. So in date of birth you can clearly see that it is mentioned that fill in your date of birth as recorded in secondary school leaving certificate or equivalent examination, and this should be in the format given. So according to the note given here, we have filled the date of birth according to class 10th certificate, and also we have uploaded the class 10th certificate document in upload section for date of birth. So जो next query है वो है about the course applied for. The candidate who are willing to apply for MDS can mark the MDS option, and the candidate who are willing to apply for other option than MDS can mark the MD or MS option, as here we have only two options given. तो नेक्स्ट क्वेरी है कैटेगरी के रिगार्डिंग. सो इन कैटेगरी in the prospectus it is clearly mentioned that applicants seeking reservation or relaxation benefits available for SC, ST, OBC, EWS or person with benchmark disabilities must ensure that they are entitled to such reservation or relaxation. They should be in possession of all the requisite valid certificates in the prescribed format in support of their claim. तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होने चाहिए आपके वैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर द कैटेगरी. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डेट ऑफ द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट. सो यहाँ पर मेंशन है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड. सो जो फॉर्मेट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उस फॉर्मेट में होना चाहिए सर्टिफिकेट. एप्लीकेंट बिलोंग टू द नॉन क्रीमी लेयर एंड कास्ट अपीयर्स इन central list of the OBCs. Now, validity of the non-creamy layer certificate shall be issued from 1st April 2025 to 31st March 2026, valid for financial year 2025 and 2026, and on the basis of financial year 24 to 25. Or non-creamy layer certificate shall be issued from 1st April 2026 to 25th April, that is the closing date of application, valid for financial year 26 to 27, and on the basis of financial year 25 to 26. Now, if the applicant does not have the OBC non-creamy layer certificate valid for the financial year 25 to 26 or 26 to 27 at the time of registration, the applicant must upload the previously issued older OBC non-creamy layer certificate with the acknowledgement slip of the OBC non-creamy layer certificate application for renewal. So, एक तो जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं या तो इस डेट के बीच का होना चाहिए, या फिर इफ़ इन केस पुराना सर्टिफिकेट है तो उसके साथ आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो कि रिन्यूअल की होगी वो अटैच करके अपलोड करनी पड़ेगी. हाउएवर एट द टाइम व्हेन आस्क्ड टू सबमिट और अपलोड द वैलिड सर्टिफिकेट, द एप्लीकेंट मस्ट प्रोड्यूस द एप्लीकेबल सर्टिफिकेट वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 to 26 और 26 to 27 विद इन द डेट एज मेंशनड अबव. नाउ फॉर EWS certificate. EWS certificate issued in prescribed format for the employment in central government on the basis of income of financial year 24 to 25, issued from 1st April 25 to 31st of March 26, valid for the financial year 25 to 26, or on the basis of income of financial year 25 to 26, issued from 1st April 26 to 25th April 2026, that is closing date of application, valid for the financial year 26 to 27 will be considered valid. So similar dates हैं आपके EWS के सर्टिफिकेट के लिए भी. तो यहाँ पर ये भी क्लियरली मेंशन है कि द SC और ST और OBC और EWS और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी uploaded with online registration on or before last date of registration as mentioned in the important dates or notice published. Next यहाँ पर mentioned है applicant will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belong is included in the list of reserved communities issued by the central government. And for economically weaker section reservation, the candidate should meet the criteria issued by the central government. The certificates uploaded by applicants for reservation or relaxation will be preliminary scrutinized at the time of seat allocation, that is the phase 3 of INICT, and if the certificates uploaded by applicant to support their claim for community reservation are not found valid or not found issued within dates mentioned in note 2 that we have described earlier, then the applicant's candidature may be considered
as of general category and will be considered for unreserved seats in all INS subject. तो इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया आपको अपलोड करने हैं अकॉर्डिंग टू द डेट्स mentioned in the prospectus or official notice or notification of the INICET, and the caste should be in the central government list and according to the format provided. तो जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है अबाउट द मार्क्स. सो यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड that applicants incorrectly fill total marks of the first or third professional examination instead of aggregate of all MBBS or BDS professional, that is 4-year exam marks. So aggregate of all professional MBBS or BDS professional examination is required to be filled. तो यहाँ पर आपको जो मार्क्स फिल करने हैं वो आपको एग्रीगेट फिल करना है of all professional MBBS or BDS exams. And in case of supplementary exam in one or more subject, please use only the marks obtained for successful completion. And for international candidates who have graduated from foreign universities, marks obtained in the FMGE, Foreign Medical Graduate Examination conducted by the National Board of Examination, shall be considered in lieu of aggregate marks. So for the candidates who have graduated from the foreign universities, the marks obtained in FMGE will be considered. Now for the foreign nationals, the candidates are required to obtain a certificate of grading system from applicable university or institution to determine the value of grading in percentage. Marks calculated accordingly must be filled in marks column for the completion of application. नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है अबाउट इंटर्नशिप स्टार्ट डेट. तो इंटर्नशिप स्टार्ट डेट में कुछ एक एप्लीकेंट्स को यहाँ पर प्रॉपर मंथ एंड ईयर शो नहीं हो रहे, तो इसके लिए आपको पहले अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल कम्प्लीटली एंड करेक्टली फुलफिल करनी है, देन यहाँ पर आपको प्रॉपर मंथ एंड ईयर शो हो जाएंगे. नेक्स्ट जो क्वेरी है वो है हमारे पास अबाउट द रजिस्ट्रेशन परमानेंट और प्रोविजनल. सो इफ़ इन केस you don't have permanent registration, then you can fulfill the provisional registration details, and if you have permanent registration then you can fill your permanent registration details. जैसे कि हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन्ड है, कैंडिडेट मस्ट हैव completed the required period of 12 months compulsory rotating internship or practical training on or before 31st July 2026 for the all INIs. तो यहाँ पर मेंशन है कि 31 जुलाई तक या फिर उससे पहले आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए. एज वी नो दैट जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन होती है वो आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद होती है. तो दैट्स वाई यहाँ पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऑप्शन है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने डिटेल्स फुलफिल कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेक ऑफिशियल INICET 2026 प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन एंड ऑल अदर नोटिस इन द ऑफिशियल एम्स वेबसाइट. You can also check out other videos regarding important dates, eligibility criteria, exam fees pattern and complete form filling step by step on our channel. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.